Good evening, ladies and gentlemen. I am Ratan Pratap. Firstly, let me welcome all of you to B Lounge and Let. What a wonderful venue. Looks like an amazing place. Can I have a huge round of applause, everybody? A little energy, come on. अच्छा मुझे बताइए, आप लोगों में से who all dances over here? How many of you like to dance? You know, well, not as a performer, I wouldn't say performer, even if it's in a bathroom, if it's in a barat, somewhere or the other, right? So dancing is something that binds us all together always. Whether it's passion, whether it's just to kill your time, just to pass your time, or you're a professional performer, there are different ways that we connect when we dance. And tonight is a very special night. It is the eve of International Dance Day. कोई मुझे बता सकता है इंटरनेशनल डांस डे क्या होता है, हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? एनीबडी पता है किसी को? यार एक्चुअली मुझे भी नहीं पता है, बट मैं बताऊंगा, एक इंसान है यहाँ पर जिनको पता है, जिसकी वजह से हम सब यहाँ पर आए हैं. Thank you so much to the members of the media for being here, all the performers for being here. You know, tonight is going to be very special. Yet again, I'm mentioning it because we have 3 times National Excellence Award winner, Rabindranath Tagore awardee, Sandeep Soparkar, reality TV judge and a ballroom dancer. Of course, with him, we have the very gorgeous Shanti Priya, actress, performer. You know, before we start the evening and before I call Sandeep sir over here, I have a short video. Can I have the video, please? Can I have the AV? Next contestant, please. जितनी तुम सुंदर दिख रही हो उतना ही सुंदर तुमने डांस किया. She's one of the most beautiful women I've ever met. Please welcome the very graceful, the very talented Sandeep Soparkar. विश्व में बिखरे हुए डांस परफॉर्मेंस समेट कर इस मंच पर लाने वाले हमारे संदीप सोपारकर जी. With a huge round of applause, can I have Dr. Sandeep Soparkar? Guys, come on, welcome him with a little more enthusiasm, you guys. Sandeep sir, welcome, thank you so much. You're the reason that all of us have gathered here. आप मुझे बताइए, सबसे पहले इंटरनेशनल डांस डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं और उसका आपके जिंदगी में क्या महत्व है? Good evening, everyone, and it's absolutely wonderful to be here. Thank you so much for coming and enjoying this. I hope you enjoy this evening. Well, it's very simple. International Dance Day, or the World Dance Day that we call it, is the birthday of the legendary person who made modern ballet, that is Jean Nouvel. And it's his birthday on the 9th of April.
और उनका जन्मदिन मनाने के लिए हम लोग दुनिया भर में इसको सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज ही वॉज द क्रिएटर ऑफ द मॉडर्न बैले. ही वॉज बोर्न इन द 17th सेंचुरी. सो इतने सालों से चला आ रहा है. जस्ट दैट प्रॉब्ली अवेयरनेस अभी बढ़ गई है और दुनिया भर में भी मनाया जाता है. बट कुछ साल पहले, ऑलमोस्ट 20-25-30 साल पहले, इट वॉज ओनली अ पार्ट ऑफ द यूरोप एंड अमेरिकन कल्चर. बट आई एम सो ग्लैड दैट मॉडर्न बैले का जो लेगेसी है वो हमारे देश में भी आई है एंड वी आर सेलिब्रेटिंग इट नाउ. थैंक यू. Thank you, sir. Thank you so much for letting us know. I mean, we should have known this before. It's so strange. I think even in India, ballroom dancing जो है वो आप ही ने introduce किया था. You are the one. He's the man who brought ballroom dancing to India. The Queen of England has thanked him. I mean, his achievements, I can go on and on and on about it. But it's such a pleasure to be here, sir. And I think we should start the night, but before that, there's a very special person that we need to call on stage, and I think I would let you do the honor, sir. I saw this wonderful lady on screen way back in the 1990s, and I must admit that I fell in love with the characters that she played. And since then, I was a big fan, and I got an opportunity to meet her just 2 years back when she came to me for dancing lessons, and I felt I was an honored person to be teaching someone like her who I was a big fan of. And today she's performing with me, so I feel absolutely privileged to be calling her on stage. Please welcome my very dear friend, Shanti Priya. I have a question for you. I know that this is our probably the second or third performance, but for the World Dance Day you're performing before as well. How do you feel being here with all of us? First of all, I would like to say thank you very much and good evening everybody. Thank you very much, sir. Okay. I'm a little nervous because performing with him on this very first day, which I've learned 2 years back on April 28th for the waltz, when he asked me, will you dance with me for waltz for an International Dance Day? I said, sir, I have no clue about, because I'm a classical dancer, which I've learned from childhood with dedication and hard work. And today, when I'm here, I can tell I'm grounded because of dance. My discipline, my punctuality, and my hard-working goes to dance. And when he asked me to dance for an International Dance Day, I was like, no, sir. He said, no, you can. So I think 4 days he just taught me waltz. Yeah, because you have to fly UK, London. So I said, only 4 days, sir? He said, no, you will do it. I said, okay. So I did the dance and I fell in love with the dance, ballroom, and I said, I wanted to learn from you. So he said, you're most welcome, and from that day, I'm here today. Yes, thank you very much. You know, we dancers believe that dance for us is bhakti, is puja. Though we are doing Western dance styles, though we are at a lounge bar and a deck like this, which probably is a modern scenario, but still we dancers believe that dance for us is puja, dance for us is bhakti. And I believe that यही भक्ति जो है भव पार लगाती है, ये भक्ति भव सिंधु तिराती है. भक्ति भगवान में भेद कैसा, ये भक्ति भगवान से मिलाती है, ये भक्ति भगवान को बनाती है. That is our dedication towards our art, and I hope you will enjoy this evening because we have various dance styles for you, and Ratan is going to introduce all of that. Thank you. I would still request you to wait. I have a few more important people who have facilitated this evening for us. I would like to call them on stage. Let me start off by calling Mr. Haresh Mehta, Rajesh Srivastav ji, President and Vice President of India Fine Arts Council. Would request you to please join me on stage, sir. Ladies and gentlemen, Haresh ji and Rajesh ji, they are the President and Vice President of India Fine Arts Council. It's a body that has always encouraged art and artists. Sir, welcome. Thank you so much for supporting this event. And क्या कहना चाहेंगे आप आज की शाम के बारे में? इंटरनेशनल डांस डे है संदर्भ में, और इंटरनेशनल डांस गुरु हमारे बाजू में खड़े हैं, तो इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है. और इंडिया फाइन आर्ट काउंसिल जो है वो यंग आर्टिस्ट को प्रमोट करता है, और इसमें संदीप भाई का बहुत बड़ा रोल है, इनका बहुत बड़ा सपोर्ट है. संदीप भाई का सपोर्ट होने के नाते ये इंडिया फाइन आर्ट काउंसिल जो है उसने अपनी जो तरक्की
सपोर्ट कर रही और कर रही है आगे भी। सर आपका सपोर्ट हमेशा हमारे साथ रहता है और इसी तरह से आप हमको सपोर्ट करते रहिए। और एक बात और मुझे कहनी है, मुझे मौका मिला है सर कि संदीप सर के सपोर्ट से इंडिया फाइन आर्ट काउंसिल जो है वो बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी एक्टिंग कोच है जिसको 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो सी इज रेडी, सी अलॉन्ग विथ हर सन रिची चांस हैव एग्रीड टू टीच इंडियन आर्टिस्ट, कोच करने के लिए तैयार है और बहुत ही जल्द। तो मैं समझता हूँ एक दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि वो बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर लोगों को उन्होंने ट्रेन किया है और साथ में एक बहुत बड़ा लाभ है इंडियन एक्टर के लिए बॉलीवुड स्टाइल से एक्टिंग सीखने के लिए। तो और एक बात से मैं और कहना चाहूँगा सर कि जो भी एक्टर मेरिट पे अगर रिची चांस और बॉबी चांस को अच्छा लगा तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हॉलीवुड में तो काम मिलेगा वो एक्टर को। और रतन प्रताप जी, I know I respect you. You always carry yourself with dignity and discipline. Celebrations to yourself. और संदीप जी, आप तो साउथ की बहुत बड़ी हीरोइन है, हिंदी पिक्चर में काफ़ी काम किया है, आपके डांस भी देखे हैं, मिथुन चक्रवर्ती, शायद अक्षय कुमार, और इसी तरह आज भी हमको देखने का मौका मिलेगा आपका सर के साथ डांस करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी को नमस्कार। और इंडिया फाइन आर्ट्स काउंसिल के इस कार्यक्रम में आगे बहुत अच्छा लग रहा है, हमारी अपना है और इसकी परिकल्पना जो है हरीश मेहता जी ने किया था। और जब श्री संदीप सोपाकर जी जब इसके चेयरमैन बने तो इन्होंने जैसी इनकी ऊंचाई है ऐसे इन्होंने अपने इंडिया फाइन आर्ट्स काउंसिल को ऊंचा पहुँचा दिया, तो बहुत अच्छा लगता है। और संदीप जी का बहुत आभार, और मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और हमेशा मतलब हम इंटरनेशनल कोरियोग्राफर हैं, डांसर हैं, लेकिन एक कार्यक्रम में जब आपका देखता हूँ तो मैं उस कार्यक्रम को मिस नहीं करता हूँ और रोटे खड़े हो जाते हैं। एक कार्यक्रम होता है गंगा, जिसपे हेमा मालिनी जी गंगा बनती हैं और शिव बनते हैं। कभी आप लोगों को मौका मिले ऐसा तो ज़रूर देखिएगा। आप इनके बहुत बड़े फ़ैन तो हैं लोग, और बड़े फ़ैन होते हैं। बहुत बहुत आभार संदीप जी, बहुत बहुत आभार। Thank you so much, sir. I mean, I don't know what to say. They are exceptional men. India Fine Arts Council के through आप लोगों ने जो किया है आर्टिस्ट के लिए, it's just too good. And not just that, entrepreneurs, businessmen, आपका शिक्षा अभियान, sir, thank you so much for your contribution to the society. All right, next I would like to invite the chairperson and the managing director of this wonderful venue, V Lounge and Deck, Dr. Anant Vaidyanathan. Can I please have you here on stage, sir? Everybody can have a huge round of applause, because without the support of Dr. Anant, we would not be here. So thank you so much for supporting our initiative, sir. Please कुछ कहिए, आपने क्यों ये initiative, why did you get behind this initiative and what was the thought? Well, very good evening everyone. I hope all are having a good time. Dear answers, are you having a good time? Yes? I know Mr. Sandeep Soparkar in the past 12 to 13 years. But I know from the day we started working together, and that was again 12-13 years before, as an International Dance Day only, at V Lounge and Tech Juhu. And from there we started the journey, and we did not lose our contact. And the touch was there always. And he used to be so kind every time. So I told him, sir, this time we have to do it here. And he said, Anand, we will do it here. And then I told him, sir, it has to be done. He said, yes, we will do it. And he has made it today. And I'm so very happy, sir. Thank you very much for you, and thank you very much. Vanakkam. Vanakkam. So I am also from South only, but I have also seen her movies and seen a big fan of her sister Bhanupriya, who had danced so very well in a movie called Aragan in Tamil, which I must have seen at least 22 times. So that is how the way goes. So it's a long relationship. I am so very thankful, Mr. Sandeep, for coming to our place and doing this big honor to us and allowing us to host you here. My privilege. Thank you so much. Have a nice time now. After Sandeep Soparkar making the dance floor on fire, our bartender Ajay Karwa will make a real bar show on fire again. Thank you. Thank you so much, sir.
We can do stills if you want. We can do a quick group picture for all the people involved here. All right, thank you. Thank you so much, ladies and gentlemen. It's time to start the show. All right. We are going to be starting with one of the classics of all dances, the ever so elegant and graceful English waltz. Please welcome Chandrika Kamath and Ajinkya Sonavne dancing for you the waltz. यार ये लोग इतना मेहनत करके इतना रिहर्स प्रिपेयर करके डांस डे सेलिब्रेट करने आए, इतना फीका रिस्पांस. Come on, can I have a huge round of applause for our first act? The waltz, ladies and gentlemen. कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो. क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है. Superb, simply amazing. You guys really stole the show. What a fabulous performance. Thank you so much. You know, now we are going to move from the dance of romance to the dance of fight. मैं आप लोगों से पूछूंगा, it's a Spanish dance form. आप लोग guess करके मुझे बताइए which dance is it? It's a dance of fight. It involves a bull. Sorry? Paso Doble, absolutely. Presenting Paso Doble, Spanish Paso Doble, we have Avantika Gupta and Ankur Bhatti. Ladies and gentlemen, Paso Doble.
That was really amazing. Can I have a huge round of applause for these two performers? A dance of fight presented to us by these beautiful performers. Up next, okay, हमने classic forms तो देख लिए. We saw Western classic forms, but it is International Dance Day. And why should Indian classic be left behind? We bring together the first act of our Indian classic dance performance. Before that, we have a few students from Nalanda Nritya Kala Mahavidyalaya. Let me just inform you, they are going to be performing here. Would like to thank their principal, Dr. Uma Rele, for supporting us and for joining hands with us to celebrate this wonderful day. All right, up next, please welcome Jainami Gada and Mohan Raj Acharya presenting Bharatnatyam. चाम्पेय गौरार्ध शरीरकायै कर्पूर गौरार्ध शरीरकाय चाम्पेय गौरार्ध शरीरकाय कर्पूर गौरार्ध शरीरकाय गम्भीरकाय जटाधराय गम्भीरकाय जटाधराय सृष्टिन्मुख लास्यकायै समस्त संहारक ताण्डवाय समस्त संहारक ताण्डवाय शिवाय
Ladies and gentlemen, that was Meera Bag and Mohan Raj Acharya from Nalanda Nritya Kala Mahavidyalaya, our very first Indian classical act, and what a beautiful performance. Alright, before we move ahead, I'd like to take this opportunity to thank Dr. Anand Vaidyanathan and his entire team at V Lounge and Deck for partnering us with us on the venue. Mr. Harish Mehta, Rajesh Srivastav ji from India Fine Arts Council, Jameel Shah of Shah Shoes, Nazim Sheikh from Vicetron, Abhishek Dubey from Pigeon PR for bringing the event together for us. Alright, so the next act is very special. You know, कहते हैं कि dance की कोई सीमा नहीं होती. If you have passion, it doesn't matter what profession you're from, you can dance. So the next act embodies just that. One of them is a very well-renowned gynecologist from the country, and the other is also a very well-known doctor. Please put your hands together for Dr. Siru Agrawal and Dr. Munish Garg showing off some of their moves. कदम जो मिले तो फिर साथ हम तुम चले साथ हम तुम जहाँ वहीं पे बने काफिले छोड़ दो खुद को ऐसे मेरी बाहों में जैसे हवाओं में बादल कोई छोड़ दो खुद को ऐसे मेरी बाहों में जैसे हवाओं में बादल कोई कदम से कदम जो मिले तो फिर साथ हम तुम चले साथ हम तुम जहाँ सभी बोले सारी रारी रारी ये दीवानगी का है शो Dr. Munish Garg and Dr. Siru Agrawal, wonderful. Thank you so much for doing this for us. I know कि आप लोग actually doctors हैं, but आपका ये passion है and आपने हमारे लिए perform किया. Thank you so much. मेरा कुछ भी problem रहा, I will definitely call you. Please don't charge a fee. Thank you. Thank you. All right. Now moving forward to the dance that is ruling the charts. Every Bollywood movie, every performance, we see this dance form soaring and roaring, a high voltage dance, the hip hop. And presenting the hip hop is Amit Rawat and Shashank Singh Parihar from Sandeep Soparkar's team. एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी।
नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है। और मैं सिर्फ ये कह पाता था, आज ही यारों किसी पे मर के देखेंगे हम। किसी की यादों में खोए हुए ख्वाबों को हमने सजा लिया। ऐ यार प्यार में कोई, ऐ यार प्यार में कोई ना जागता न सोता है। कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है। क्या एनर्जी थी यार, मजा आ गया ये देख के। What a cool Bollywood flavored hip hop performance. Thank you so much, both of you. Alright, up next is the tantalizing tango. Now, tango, this dance form means different things to different people. It originates from Argentina. It's danced all over the world. Would like to welcome Kiran Holkar and Abhishek Bora dancing for you the tango. सतरंगी रे मन रंगी रे कोई नूर है तू क्यों दूर है तू जब पास है तू एहसास है तू कोई ख्वाब है या परछाई है सतरंगी रे सतरंगी रे इस बार बता मुझोर हवा ठहरेगी कहाँ इश्क का
something that was fiery, that was tangy, and that was tantalizing. Tango, ladies and gentlemen, by Abhishek and Kiran. Alright, thank you, you were fab. Moving on to the next performance. Well, अच्छा एक वेब शो है, India's biggest web show that's coming up right now. Can anybody tell me ये जो song है इस song की actor भी उस show में है? Can you tell me which web show that is? Which web series that is? Something that's coming up right now. The director of Devdas, Sanjay Leela Bhansali, उनका next show, which is Hira Mandi, absolutely the most anticipated show. Well, the next act is very special. Dance Guru and Hirkani awardee Vijay Shri Chaudhary ji, जिन्होंने इस show में choreograph किया है. She has specially choreographed the act which is coming up. It's a Kathak performance. We'll call her here on stage after the performance and have a few words with her. But before that, please put your hands together for Agrima Grover, Princey Namdev Singh and Mrinmayi Biswas dancing for us the Kathak. Mesmerizing is the word. Whenever I see Kathak, especially this particular performance, this particular web show, the choreography, let me call on stage Vijay Shri ji. Vijay Shri ma'am, can I have you here on stage with me, please? Ladies and gentlemen, give it up for the choreographer of Hira Mandi, Vijay Shri Chaudhary ji. Ma'am, बहुत ही ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस, व्हाट अमेजिंग कोरियोग्राफी. और ये सॉन्ग भी जब जो भी हम देख पा रहे हैं, सब तो हम ग्लिम्सेस हमने नहीं देखे, बट आपने 2 सॉन्ग्स किए हैं इस मूवी के. बट दिस वाज अ परफेक्ट ट्रेलर फॉर व्हाट इज टू कम. थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग हैंड्स विद अस ऑन दिस मैम. क्या कहना चाहेंगे आप इंटरनेशनल डांस डे के सेलिब्रेशन के बारे में एंड अबाउट योर. अच्छा पहले आप वो बताइए, फिर मैं आपको एक और सवाल पूछूंगा. पहले तो आप इंटरनेशनल डांस डे, ये जो सेलिब्रेशन है इसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए
हम हमेशा एक लाइन कहते हैं कि मेरा मन आज खुशी से नाच उठा। हम कभी और किसी चीज़ का नाम नहीं लेते कि आज मेरा मन खुशी से गा उठा वगैरह, ऐसे नहीं कहते। हम कहते हैं हमारा मन खुशी से नाच उठा। तो मेरे लिए एवरी डे इज़ यू नो कि हर दिन मेरे लिए इंटरनेशनल डांस डे है, एवरी डे। इसके अलावा ये जो शो है इट्स डायरेक्टेड ऑब्वियसली बाय संजय लीला बंसाली। ही इज अ परफेक्शनिस्ट, ही इज आई थिंक ही इज एन इंस्टीट्यूट इन हिमसेल्फ। एंड आपने अभी उनके साथ रिसेंटली इतना काम किया है, तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? क्या कहूँ, मेरे गुरु पंडित बिरजू महाराज जी का आशीर्वाद है। अभी जो आपने गाना सुना उसमें एक जो पढ़ंत है वो भी मैंने की है। तो एक समझदार गुणी कलाकार है संजय सर। उनके साथ काम करने से आप खुद भी ग्रो करते हैं। आपको वो इस लेवल से उस लेवल तक स्ट्रेच कराते हैं, आपको अपने आप से इंट्रोड्यूस कराते हैं दोबारा से कि आप और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। ग्रेट मैन, और क्या कहूँ उनके बारे में, आप सब जानते हैं, उनका काम सब ने देखा है और सब चीज़ का उनको नॉलेज है, डांस का, म्यूज़िक का, राइटिंग का, और एस्थेटिकली वो इतने साउंड है कि छोटी सी छोटी डिटेलिंग भी वो मतलब उसको मिस नहीं होने देते। That's wonderful, and that's what we know of him, and just cannot wait to see this show and to see your dance and your choreography in this. But मैं इतने easily आपको नहीं जाने दूंगा। आपने अभी इस शो पे इतने सारे एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है, तो आपकी सबसे फेवरेट डांस के मामले में कौन थी उनमें से? देखिए, सबने बहुत अच्छा किया था। अपने अपने किरदार के अनुसार उनको मूवमेंट्स दिए गए थे, उनके एक्सप्रेशंस थे। तो ऐसा मैं नहीं कह सकती कि ये बहुत अच्छी थी और वो नहीं। मुझे मनीषा जी बहुत मेहनती लगी। वो मुझे अलग से ले जाती थी और कहती थी विजयश्री जी थोड़ा और बता दीजिए, इसको मैं थोड़ा प्रैक्टिस कर लेती हूँ। तो उनका अपना एक अंदाज़ था कि वो रियाज करने में यकीन करती है। ऋचा चड्ढा जो है वो आपको सुनती है ध्यान से और फिर अपने एक्सप्रेशन से उस चीज़ को उभारती है। संजीदा अपने आप में एक अच्छी डांसर है, वो बहुत अच्छा डांस करती हैं। और सोनाक्षी जी, अदिति राव है जी, उन्होंने भरतनाट्यम सीखा है, तो उनके अंदर एक मुद्राओं को लेके एक स्पेसिफिकेशंस के साथ वो मुद्राएं करती हैं और बहुत ग्रेसफुल और बहुत खूबसूरत है। मैम, आपने बहुत अच्छे से डॉज कर दिया ये क्वेश्चन को। ठीक है, तो मैं आप ये बताइए आपको सबसे परेशान किसने किया, तो एटलीस्ट वो तो बताइए चारों में से। परेशान मैं खुद ही थी अपने आप से कि और क्या अच्छा कर सकती हूँ, और क्या अच्छा कर सकती हूँ। किसी ने परेशान तो नहीं किया, मैं खुद ही परेशान थी अपने आप से। That's wonderful. Just a funny chit chat. Thank you so much for indulging. Thank you so much, ma'am, for being here and for your wonderful contribution to the entertainment business. Thank you. Ladies and gentlemen, Vijayashree Chaudhary ji. Can I have a huge round of applause for her? Thank you. Up next, ladies and gentlemen, is the dance of today, the saucy, sassy, salsa, samba, cha-cha, all mixed together in one act. Presenting this is Sakshi Sawant and Vipin Kushwaha from Sandeep Soparkar's Ballroom Studio. Ladies and gentlemen, a huge round of applause. One sec. All right. En esta noche la vida es completa. En este segundo la vida es muy rica. Segundo, la vida es muy rica.
something. That was something saucy, something sexy, and what a wonderful combination of these three dance forms. Simply amazing. Now this brings us to our final performance. Our final performance is very special. The moment that we've been waiting for. 3 times National Excellence Award winner, Dr. Rabindranath Tagore awardee, Bollywood choreographer, reality TV judge, trainer to the likes of Britney Spears, Beyonce, Madonna, Aishwarya, Priyanka, you name it, and he has choreographed for them. And with him, we have the supremely talented actress from the 90s who made her debut with Akshay Kumar, her hit Jodi with Mithun Chakrabarti ruled our hearts throughout the 90s, and now she's back and back with a bang, performing for us the dance of love and romance, which is the Rumba, is the dynamic duo Sandeep Sobharkar and Shanti Priya. Can I have a huge round of applause for Sandeep Sobharkar and Shanti Priya. तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। काश ऐसा हो तेरे कदमों से चुन के मंजिल चले, और कहीं दूर कहीं। काश ऐसा हो तेरे कदमों से चुन के मंजिल चले, और कहीं दूर कहीं। उनके साथ मंजिलों की कभी तो नहीं। तेरे बिना जिंदगी से कोई
नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। Can I hear it for Sandeep Soparkar and Shanti Priya, ladies and gentlemen? What a way to bring the night to an end. What an amazing performance, and what a pleasure to watch you live always, the both of you. Thank you so much. All the dancers. Thank you so much, Sandeep ji. And it is so very amazing to have you here. And I wish I do every year's eve here only. And I seek your blessings and going ahead, moving forward. We are here, there, always with you since 12, 13 years. But this floor is honored. Honestly speaking, this floor is honored. We have had so many people dancing in this floor, but today, no words to say. I really swear on this. कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ। मेरा पास कुछ बात करने का कुछ भी मौका नहीं। Thank you so much. And we Longchen team, can we have everybody who is sitting here for a standing ovation to the Sandeep Soparkar team, please? Standing ovation, please. This is how we Lounge does, and it is how these kind of beautiful performers perform here and make us all feel proud. Shanti Priya. Oh my God, I cannot even believe that I know the Shanti Priya quite some year before, but she's more younger than that now. Honestly, thank you so much, media, for coming here and taking the privilege of being with us, and I'm very, very honored. And we will have our own fire show, which will make more this dance floor in a fire now. Thank you so much. Please be seated. Please be seated. Please be seated. Thank you so much, sir. We share the sentiment with you, definitely, and would like to again thank you for hosting us and for having us here for this wonderful evening. Pleasure, sir. Thank you. Pleasure. Thank you for having you here. You were such a beautiful host, actually. Thank now you. I have to take a number. I take number from Lalit, sir. And that's why it was quite often here. Thank you, Thank you so Anand much. sir. Wonderful meeting you. And before we call it a night, actually एक cheer तो बनता है International Dance Day के लिए, right? सारे performers, can we hip hip, hip hip, hip hip, hip hip. That's wonderful. All the performers, could you come here? We can do a group picture. Media members would request you to do a group picture of everybody present on stage and the performers. Rajesh ji, Harish ji, please join us here on stage. Abhishek, you're a huge part of the show. Please come here. From Pigeon PR. Ashutosh, who's been handling the sound. Where is Ashutosh Arya? Please join us. Jamil Shah of Shah Shoes, kindly be here. Performers, please आ जाइए यहाँ पर. We'll line up and we'll quickly do a group photo before we end our night. रुकने भाई ऊपर ऊपर चले ऊपर ऊपर पहले वाले पे नहीं है, पांच फ्लोर पर जाइए। Thank you to all the performers for performing here. And this is me, Ratan Pratap, signing out. See you soon next year. Yes, the same Melody also. अंकुर Thank you so much. Hello.